Hello guys, welcome everyone to the Physics Well Method. Give me a thumbs up if I'm live and audible to all of you. This is Dr. Patil and here we're going to discuss about chronic heart failure. Now, I would wait for your response. Once you confirm that I am live, we will start with a discussion today. So we're going to talk about chronic heart failure. So can you tell me what comes to your mind when you think about heart failure? What is your concept of heart failure? We'll get into the proper concept of heart failure, but I want to understand from you, what do you think when someone is talking about heart failure? Well, if you propose someone and they reject, that is not heart failure, that is heartbreak, right? Dil toot gaya. Failure, what is the concept? Now, to understand the concept of heart failure, first we need to understand what are the functions. So if you can tell me the functions of heart failure in two simple sentences, then you understood the concept of heart failure. So can anybody tell me what are the functions of heart? See, failure is basically some organ which is supposed to do a particular work is not able to do that work. Then we say this organ has failed, right? For example, kidney is supposed to eliminate excess fluid from the body. If it is not able to do, that is renal failure. Kidney is supposed to eliminate toxins from the body. If it is not able to, then it is renal failure. Kidney is supposed to eliminate excess potassium from the body. If it is not able to do, then we can count it as renal failure. Similarly, if you know the functions of heart, then you already have the concept of heart failure. Good evening, Avinash, and good evening, Nuseba. So can anybody tell me what do you mean by, what are the functions of heart? Well, heart primarily has two functions. The first function is it is supposed to deliver blood to your tissues, because blood is the carrier of your nutrients and oxygen, and it has to be delivered or distributed to all your tissues, right from your scalp to the skin on your feet. The blood has to be delivered and the responsibility is on the heart. Now, which chamber is doing this responsibility? Obviously left ventricle, and similarly right ventricle has the responsibility of delivering the blood to lungs for the purpose of oxygenation. But is that it? No. Delivering the blood or providing the blood to tissues is definitely most important function. But first, can heart synthesize its own blood? Obviously no, right? So first, heart has to receive the blood from the respective sides. For example, if I'm talking about right side of the heart, right atrium has to receive the blood from superior and inferior vena cava, give it to the right ventricle. So right ventricle should receive the blood from the right atrium. And similarly, the left ventricle has to receive the blood from the left atrium. Only when it receives, it is able to eject and give the blood to tissues. So if it is not able to receive well, then obviously it can't give well to the tissues, right? So if left ventricle is not able to receive the blood from left atrium, can it give the blood to tissues? No. Now, if it receives, no issues with receiving the blood from the respective atrium, but if it is not able to contract well to eject, again the tissues won't get blood supply. So in other words, I would say heart has two functions. It has to receive the blood from the atria and then eject it to reach the target. For the left ventricle, target is tissues. For the right ventricle, target is lungs. Failure to receive the blood properly or failure to eject the blood properly, both comprise heart failure. So that is why when we define heart failure, we define it as it's a complex clinical syndrome where structural or functional cardiac ailments lead to impaired ventricular filling or ejection. Ventricular filling or ejection. If ventricles are not able to eject the blood well, it is heart failure. Ventricles not able to fill well, it is heart failure. Now, how do we classify heart failure? Heart failure is classified on various bases. The two commonly practiced classification systems are describing which side of the heart is affected, right? Based on the side of heart affected, we can classify heart failure as right heart failure and left heart failure. And the second and most common or the prevalent practice of classifying the heart failure is based on the ejection fraction. So going forward, we will understand the concept of ejection fraction, but before that, we will look at this anatomical classification of heart failure as right heart failure and left heart failure. So if I'm talking about right heart failure, primarily I'm talking about ventricles, right ventricle. Similarly, if I'm talking about left heart failure, primarily I'm talking about left ventricle. Now, what is the function of right ventricle? You would say, sir, eject the blood so that it goes to the lungs and then eventually goes to the left side of the heart.
Very good. But that's not the only function. There is an important function. Right ventricle has to receive the blood from the right atrium. Now to understand this concept, let us take this example of a sanitization bottle. Now in this bottle, there is some amount of sanitizer. I want to bring the sanitizer out from this container. How can I do that? You would say, sir, open the cap, tilt it down, gravity will pull it out. But if I want to eject the sanitizer out from this container against gravity, what should I do? You would say, sir, squeeze, right? Squeeze hard enough and it will come out. But when I'm squeezing hard enough, I'm applying one basic physics principle. What is that? I am elevating the pressure inside this container over and above the pressure of the atmosphere. So physics says fluid moves from fluid, not just fluid, even air moves from higher pressure zone to lower pressure zone. So if I have to transfer blood from right atria to right ventricle, what do I need to achieve? I need to achieve the pressure inside the right ventricle to be lower than the pressure inside the right atrium. Then the blood will move from right atrium to right ventricle. So now to be able to receive the blood from respective atria, the ventricles have to lower their pressure. How can they lower their pressure? In cardiac cycle, we come across a phase called as isovolumetric relaxation, right? So during diastole, ventricles relax to lower their pressure. Only then blood fills the ventricles. So if they fail to relax, they will not be able to fill the ventricles. So if I'm not able to fill the ventricles, if I partially fill, I will partially eject, right? So then if there is impairment in the ventricular relaxation, that will lead to impaired filling. And okay, let us say that I have filled it well, sufficient blood is there in the ventricles. Now ventricles have to contract and generate good force to eject this blood. So if they're not able to generate good force, then they may not be able to eject good amount of blood. In both cases, it is heart failure. If these pathologies only affect the right side, then we will call it as right heart failure. If the pathology affects the left heart, we will call it as left heart failure. Now, what symptoms these will lead to? Let us say I have right heart failure. That means either my right ventricle is not able to receive the blood well from the right atria because it is not able to relax to receive. It needs to relax. It is not able to do. Or it is able to receive, no issues in filling of the ventricles. But once I've filled it, it is not able to contract with sufficient force to eject well. In both these cases, one important change happens. What is that? If I'm not able to eject well out of the ventricle, means I have a problem in systole. What will happen to the pressure inside the right ventricle? It will start going up because more and more fluid is staying back in the right ventricle. So right ventricular pressure will get elevated. Now for me to transfer blood from right atria to right ventricle, I have to elevate right atrial pressure over and above the right ventricular pressure. So indirectly what happened? There is rise in the right atrial pressure. क्यों हो रहा है? Because I was not able to eject the blood well from the right ventricle. ठीक से eject नहीं कर पाया, ज़्यादा blood ventricle में ही बच गया. जितना ज़्यादा बचेगा ventricle का pressure उतना ज़्यादा होगा. अब right atria को अगर ventricles में fill करना है तो इसका pressure right ventricle से भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा. So right atrial pressure increased. Same applies to left atrium. And now let us think of the other scenario. The ventricle is able to eject well, right? It is muscular chamber, but it is not able to relax during the diastole. अगर relax नहीं कर पाएगा तो it will not receive the blood because to be able to receive the blood well, its pressure has to be lower than the right atrial pressure. ठीक से नहीं हो पाएगा. Again, ultimately what happens? Right atrial pressure has to rise. So whether it is the failure of relaxation or failure of contraction, ultimately the respective atria's pressure increases. Now, if the pressure in the right atrium increases, let us say the right atrial pressure is high. Now, for me to be able to transfer the blood from the veins into the right atrium, the pressure in the veins has to be higher than the pressure in the right atrium. So, what will happen then? The pressure in the veins starts building up because only then I will be able to push this blood into the right atrium because physics कहता है fluid will move from high pressure to low pressure zone. If right atrial pressure is high, until and unless my superior and inferior vena cava pressure is higher than that, the blood will not go into the right atrium. So then what will happen? First thing I will notice is that the pressure inside the internal jugular vein is going up. Why is it going up? Because
your subclavian vein and internal jugular vein fuse to form superior vena cava, which drains into right atrium. So if right atrial pressure is high, in all these veins the pressure will be high. So one thing we can expect is that there can be rise in the JVP if my right heart starts failing. Second thing, similarly, inferior vena cava pressure is high, and that leads to congestion of the liver. Now, why that should lead to congestion of the liver? Why that should lead to congestion of the liver? We know that liver has dual blood supply, right? It gets blood from hepatic artery, but also more importantly, it gets blood supply from what we call as portal vein. So this is my portal vein, which is formed by fusion of splenic vein, a vein coming from the spleen, and the superior mesenteric vein. They fuse and form what we call as portal vein, right? Now this inferior mesenteric vein, as you know, also joins the splenic vein. So I can say that the blood coming from your spleen and the blood coming from your intestines is all going to liver. It's a beautiful design by nature, because when we eat food, we are eating nutrients and toxins. And we know that liver is the largest metabolic organ in the body. So all that first gets absorbed in your intestines. And once it is absorbed, it has to pass through liver for the metabolic process and detoxification. After that, the blood should enter into your system or the body. So blood will now go to the portal vein and enter the liver. After whatever metabolic processes needs to be done, this blood will return to systemic circulation through hepatic veins. Now hepatic vein joins the inferior vena cava. So if inferior vena cava pressure is already high, then for me to be able to drain blood from hepatic vein to inferior vena cava, my hepatic vein pressure has to be higher than the inferior vena cava. Now think about the liver. On one end, portal vein is pushing the blood into the liver. On the other hand, the blood is not able to leave the liver because the pressure in the hepatic veins is already higher. So then what will be the fate of this blood? It will start stagnating, staying in the liver. So when it starts stagnating in the liver, then we call it as chronic venous congestion. Chronic venous congestion. Why are we calling it as chronic venous congestion or CVC? Because chronically elevated hepatic vein pressure has made the blood to stagnate. Stagnation, we will call it as congestion. Stagnate in the liver. So now this liver will enlarge in size because of this fluid stagnating. So this chronic venous congestion would lead to hepatomegaly. Now when I palpate this patient's abdomen, I may feel, the patient may feel a little bit of pain. So there will be tenderness, tender hepatomegaly because of venous congestion. This is what pathologists usually describe it as. When they take a cut section, it looks like nutmeg. So they often describe it as nutmeg liver, which you might have already seen in your Robbins or the Ranjit sir's notes. Okay. Now eventually what happens? Liver is also loaded with blood. Now for portal vein to get blood into the liver, portal vein pressure has to be higher than the pressures inside the liver. So eventually portal vein pressure starts rising. When the portal vein pressure starts rising, we call it as C. Pressure inside the pulmonary artery rises, we call it as pulmonary hypertension. Pressure inside the aorta and the other systemic branches rises, we call it as systemic hypertension. If pressure inside the portal vein rises, I will call it as portal hypertension. So can heart failure lead to portal hypertension? Absolutely yes, it is one of the leading causes for portal hypertension. Now what will happen once I develop portal hypertension? Pressure inside the splenic vein will rise, eventually the congestion of the spleen. So that can lead to what we call as splenomegaly. Then fluid will leak into the peritoneum because of the pressures at the intestinal vessels increases. So we'll call it as ascites. And similarly, elevated pressure inside the inferior vena cava will result in difficulty in draining the blood, eventually causing pedal edema. So these are all signs of right heart failure. Signs of right heart failure. So what are the signs and symptoms of right heart failure? You can have raised JVP. You can have tender hepatomegaly, that is enlarged liver. You can call it as chronic venous congestion, hepatomegaly due to chronic venous congestion. Then third, you can have portal hypertension and its features. Portal hypertension and its features, including splenomegaly. You can have ascites and you can have pedal edema. Pedal edema. So these are all features of right heart failure. Now what can cause my right heart to go fail? See, failure can be of two types.
Either heart fails to relax, thus it fails to fill, or it fails to contract, thus it fails to eject, right? Thus it fails to eject. Okay, so the see, portal hypertension is what? Elevation in the portal vein pressure. Why portal vein pressure is going high? Because the blood from the portal vein is supposed to go into liver, but liver is already congested, right? It is loaded with blood. Pressures inside the liver is already high. So now for the portal vein to push blood into the liver, its pressure has to be higher than the liver pressure. So obviously its pressure is going above normal. That is why we're calling it as portal hypertension. Okay. Now what can cause the failure of the right heart? First thing is, if I have ischemic heart disease, the right ventricle may not be getting sufficient blood supply, so it may not be able to contract. अगर कोई मसल को contract करना है तो उसको sufficient blood supply की जरूरत पड़ती है, नहीं मिल रही तो ठीक से contract नहीं करेगा. So ischemic heart disease can cause right as well as left heart failure. अगर left ventricle को blood नहीं मिलेगा वो ठीक से contract नहीं करेगा, right ventricle को blood नहीं मिलेगा वो ठीक से contract नहीं करेगा. But what else can cause? See, there is something called as concentric hypertrophy. What do you mean by concentric hypertrophy? So suppose this is one container. Hypertrophy means thickness of this container is increased, right? The mass is increased. इस container को मैं दो तरीके से thick कर सकता हूँ. I can add more metal outside or I can add more metal inwards. Both the ways thickness is increased, right? Whether I add more metal outside, right, यहाँ पे, or I add more metal inside, thickness is increased. So when we increase the thickness by adding more metal inside, that is equivalent to concentric hypertrophy. So if I go on adding more and more muscle inside the right ventricle, and thus the thickness of the right ventricle is increased over normalcy, then we will call it as concentric right ventricular hypertrophy. Now please remember, whenever the concentric hypertrophy happens, what happens to the chamber size? चेंबर का साइज क्या होगा अगर कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी होती है? तो आउटसाइड डायमेंशन लार्जली रिमेन्स सेम, बट कैविटी का साइज क्या हुआ? कैविटी साइज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड. एंड देयर कम्स अनदर इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी प्रिंसिपल कॉल्ड एज बॉयल्स. बॉयल्स लॉ कहता है कि जैसे ही एक चेंबर का साइज बड़ा होता जाएगा उसके अंदर का प्रेशर गिरता जाएगा और वाइस वर्सा. अगर उसका साइज छोटा होता जाएगा अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. सो इफ द cavity size decreases, pressure inside the right ventricle increases. So if pressure inside the right ventricle is high, we will not be able to fill it easily, because to be able to fill a ventricle, I need basically two things. One, ventricle उसका pressure low होना चाहिए, atria जिसका pressure high होना चाहिए, तभी तो fill करेगा. लेकिन अगर मैं ventricle की cavity छोटा करके इसके pressure को ऊपर बढ़ाया है तो फिर फिलिंग में दिक्कत आएगी. सो व्हेनेवर वी हैव कॉन्सेंट्रिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वी विल हैव इंपेयर्ड फिलिंग. सिमिलरली इफ आई हैव कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आई विल हैव इंपेयर्ड फिलिंग. अगर मैं कम ब्लड वेंट्रिकल में फिल कर पाऊंगा तो कम ही इजेक्ट कर पाऊंगा, तो वो भी एक फेल्यूर हो गया. दैट इज ऑल्सो अ फेल्यूर. नाउ इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस आई कैन हैव कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी? व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन व्हाट वी कॉल एज आफ्टर. ये आफ्टर लोड क्या है? The resistance against which the ventricle has to eject the blood. Ventricle को blood eject करने के लिए कौन resistance देगा? Mainly the pulmonic valve, pulmonary artery, right? So if I have pulmonic stenosis or pulmonary artery hypertension, pulmonary hypertension and pulmonic stenosis. Now what can cause pulmonary hypertension? Problems in the artery, right? We have studied about it. That is group 1 pulmonary hypertension, or also called as pulmonary arterial hypertension. Problems in the lungs or problems in the left side of the heart, all of them can cause pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension के response में right ventricle can develop hypertrophy, and hypertrophy के बाद ठीक से fill नहीं होगा and we have heart failure. So right heart failure के लिए the causes can be left heart disease, lung diseases, pulmonary arterial hypertension, pulmonic stenosis and tricuspid stenosis. These are all causes for right heart failure. Now the question is, among them which is the most common cause? The most common cause is left heart disease or left heart failure. Left heart failure is the most common cause for right heart failure.
Apart from that, chronic respiratory disorders, and as we know, the pulmonary hypertension. All of these can cause right heart failure. Okay. Now, similarly, let us see the symptoms that we can expect if the left heart fails. What symptoms I would expect if left heart fails? अब लेफ्ट साइड आपका हार्ट का काम क्या है? एट्रिया से ब्लड रिसीव करो. रिसीव करने के लिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग डायस्टोल. अगर वो ठीक से रिलैक्स नहीं होगा तो ठीक से रिसीव नहीं कर पाएगा, एंड देन इट हैज टू एजेक्ट. अगर ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ठीक से एजेक्ट नहीं कर पाएगा. As we studied in the right side, when both of these happen, either I'm not able to fill the ventricle well, or if I'm not able to contract the ventricle well. In both the circumstances, what happens? Pressure inside the left atrium will increase, just like how the pressure inside the right atrium was increasing. Now, if I have to bring the blood to the left atrium from the lungs, right, the pressures inside the pulmonary veins, right, as you know, pulmonary veins drain the blood from lungs to left atrium. So pressures inside the left atrium, if it is high, the pulmonary vein pressure has to be higher than the pressure in the left atrium. So pulmonary vein pressure starts going up. Now once the pulmonary vein pressure starts going up, for me to be able to get this blood coming from the right side into the lungs, into pulmonary veins, pressures in the lungs, mainly pulmonary capillaries, has to get elevated, right? So once the pulmonary capillary pressure get elevated, pulmonary artery pressure has to be higher than the pulmonary capillaries to be able to drain the blood. So pulmonary artery pressure starts increasing. We call it as pulmonary hypertension, and that is how left heart failure can lead to right heart failure. But now think about a situation where there is increased pressures inside the pulmonary capillaries. This condition is what we call as the pulmonary congestion or the congestion of the lungs. So when right heart fails, where is the congestion happening? The congestion is happening in the liver and your systemic veins. When left heart fails, where is the congestion happening? Congestion is happening in the lungs. So when congestion happens in the lungs, what symptoms do you expect? Shortness of breath and pulmonary edema. Shortness of breath and pulmonary edema. So in terms of left heart failure symptoms, you should remember dyspnea or shortness of breath. And there are some specific terms that we should be familiar here. Apart from simple shortness of breath, these patients experience what is called as orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea or PND. Orthopnea and PND. Okay. Now, can anybody tell me what do you mean by orthopnea and what do you mean by PND? Okay. Dr. Puneet, thank you. I will take it as a compliment. What is orthopnea and what is PND? Okay, I will describe both the mechanisms. Okay, what is orthopnea? On lying supine, patient experiences increased shortness of breath, which on becoming little upright, the shortness of breath gets little relieved. So they feel comfortable when they are sitting upright. When they are lying down supine, they find it very hard to breathe. Now, why does that happen in a patient with left heart failure? Now think about it. Your lungs are congested with blood, right? Your lungs are congested with blood, and because of that, you're already having some degree of shortness of breath. When you lie down, what changes happen in the body? When you lie down, first thing that happens is, because you're lying down, the blood from the veins, right? If I'm sitting upright or standing, because of the gravity, blood is all pulled into the lower limb veins. And when I lie down, all this blood will return to the right side of the heart. From the right side, it will go to lungs. Lungs are already congested and I'm overloading this with extra blood when I lie down. When I'm upright, this extra blood is spending its time in the lower limb veins. But when I lie down, I'm giving it to the lungs. So I'm overloading already congested lungs. That is one problem. The second thing that happens is, when we lie down, what will happen to the diaphragm? Diaphragm gets pushed into your thorax, making less space available for the lungs to expand. So these two factors make these patients feel more short of breath when they lie down. When they make themselves upright, the changes will get quickly reversed, right? Because once you make upright, gravity is again back in action and blood gets pulled in your lower limbs. So blood flowing into the lungs comes down.
सेकेंड, डायफ्राम जो ऊपर की तरफ पुश हुआ था वो नीचे की तरफ जाएगा, and thus the shortness of breath will get immediately relieved. So the change we notice immediately. You make them lie down, they become short of breath immediately, and you make them upright, within seconds the shortness of breath disappears. Now what is PND? What is PND? PND refers to paroxysmal nocturnal dyspnea. अब paroxysmal मतलब क्या? Intermittent, मतलब continuously नहीं चल रहा, intermittent. Nocturnal मतलब रात के टाइम, dyspnea मतलब shortness of breath. So basically intermittently in the night these patients experience episodes of shortness of breath. I'll give you some clues how this pans out. Normally these patients go to bed, sleep, they get into sleep, usually 90 to 120 minutes later, roughly 120 minutes later, they wake up with shortness of breath. And then it will not immediately disappear. They wake up, sit upright, and it takes 30 to 45 minutes for the shortness of breath to get relieved. In orthopnea, it is all immediate, right? I lie down, I'm short of breath. I make myself upright, the shortness of breath is immediately relieved because the mechanism gets reversed immediately. What is the mechanism in orthopnea? Increased venous return on lying down and diaphragm getting pushed into the thorax on lying down. Both these changes are quickly corrected as soon as I make myself upright. Blood gets pulled into the lower limb veins and diaphragm goes back to its native position. So that is the way shortness of breath gets improved or relieved. But in PND, shortness of breath appears also late, not immediately, 90 to 120 minutes after I go to sleep. And then when I wake up, right, with shortness of breath, it is not getting relieved immediately. It takes 30 to 45 minutes. Appearance of shortness of breath as well as relief is not immediate in PND, but in orthopnea, it is immediate. You make the posture change, you see the change in the shortness of breath. Now, why this is happening? Okay, so let me explain why PND happens. The main mechanism for PND includes two things. First thing is, if you have heart failure, you may be having edema. Now, if I lie down, does this edema fluid immediately come to the veins? See, what is edema? Fluid is in there in interstitial spaces. Wahan se, see, we all know that edema primarily affects the areas which are exposed to gravity more, right? Generally, lower limb, if patient is bedridden in the sacral region. Now, if I lie down immediately, have you ever seen anybody's edema disappear just like that? No. जो भी fluid third space में या interstitial space में गया है, that will slowly, once you eliminate the gravity or once you have reduced the impact of gravity on lying down, वो slowly circulation में आएगा, not immediately. But जो blood vein में pool हुआ था in the lower limbs when you're standing, that will quickly come to the heart as soon as you lie down. So that is first reason. जो एडिमा में फ्लूइड है वो धीरे धीरे से सर्कुलेशन में आएगा, जैसे ही सर्कुलेशन में आएगा वो राइट हार्ट में जाएगा, फिर लंग्स में कंजेशन बढ़ाएगा. सो कंजेशन बढ़ेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ेगा. बट व्हाई दिस इज हैपनिंग एग्जैक्टली 90 to 120 minutes after someone goes to sleep? Why not 30 minutes? Why not 3 hours, 4 hours? Because edema ki size, right? If you are fully overloaded with fluid, then sufficient fluid might come to circulation within 30-40 minutes. And if you have mild edema, then it should take more than 2 hours for all that fluid to come to circulation and cause congestion in the lungs. So why is that happening 90 to 120 minutes later only? So normally what happens when we go to sleep 90 to 120 minutes later, we enter into a phase of sleep called as REM phase of sleep, right? REM phase of sleep में क्या होता है? We start dreaming. When we start dreaming, what will happen to your heart rate? Once we start dreaming, what will happen to the heart rate? See, dreams na neutral उतना common नहीं होता है. Most of our dreams are either scary or damn happy, right? Literally, you are dancing with Katrina Kaif, or a monster is thumping your chest to kill you. This is how we dream, or at least I dream. So dreams generally are highly exciting or terrifying. Neutral dreams are less common. And when you have exciting or terrifying dreams, obviously your sympathetic nervous system gets activated and your heart rate increases. जब भी मुझे heart rate increase करना होता है ना, तो मुझे सिस्टोल या डायस्टोल में किसी का टाइम कम करना पड़ता है. अगर 1 मिनट में मुझे 120 बार बीट करना है instead of 60, I have to shorten the duration of either systole or diastole. Usually किसका हम कम करते हैं? Diastole. So if I reduce the duration of diastole, I am reducing the time available for the ventricular filling.
तो अगर कम टाइम है फिलिंग के लिए तो ब्लड ज़्यादा एट्रिया में ही बचेगा, एट्रिया में बचेगा तो एट्रिया का प्रेशर और बढ़ेगा, पल्मोनरी वेन का प्रेशर और बढ़ेगा, लंग्स में कंजेशन और होगा. This is a link why 90 to 120 minutes later after we go to sleep this shortness of breath appears. Edema fluid धीरे धीरे से ब्लड में आ रहा है and आप starts dreaming. When you start dreaming, sympathetic nervous system gets activated, heart rate increases. With increasing heart rate, diastolic का टाइम कम होते जाता है. diastolic का टाइम कम होगा तो वेंट्रिकल को फिल करने के लिए टाइम कम मिलेगा. वेंट्रिकल को फिल नहीं कर पाऊंगा तो एट्रिया में ब्लड रुक जाएगा, एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा, लंग्स में कंजेशन होगा. Now the question is, why doesn't this dyspnea disappear immediately on waking up and taking an upright posture? Well, when you wake up and take an upright posture, जो भी fluid edema compartment से circulation में आया है, do you think it will immediately return back to the lower limbs and cause edema? No. The gravity will come into force, and then over next few minutes to few hours, this fluid will shift back to the interstitial spaces. तो वो भी immediately नहीं हो रहा है. एंड ड्रीम के टाइम पे जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, डू थिंक इट विल कूल ऑफ इमीडिएटली एज सून एज यू वेक अप? नो. व्हेन यू वेक अप विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यू आर स्केयर्ड, यू आर टेरिफाइड. So for another 20-30 minutes, your sympathetic nervous system will remain activated. That is why it takes 30 to 45 minutes for the shortness of breath to disappear. So appearance and disappearance both late in case of PND. Orthopnea में both immediate because the underlying mechanisms are different. Now there's an MCQ that they have been asking multiple times. Between orthopnea and PND, which one is most specific symptom of left heart failure? What is the most specific symptom of left heart failure? Is it orthopnea or is it PND? What do you think? What is the most specific symptom? What do you think is the most specific? Well, the answer is it is not orthopnea, because I can make you experience orthopnea with having a normal heart. See, mechanism क्या था orthopnea में? एक increased venous return on lying down, और दूसरा क्या था? Diaphragm getting pushed into the thorax, right? ठूस के खाना खाओ, 10 लोगों का एक बार खाओ, your abdomen gets distended, diaphragm gets pushed up, and you can literally experience orthopnea in such situations. Many of us do feel little uneasy after a heavy meal, right? When we lie down after a heavy meal, it is a bit of uneasiness. So that is nothing but a very milder form of orthopnea, we can say. So anything that can push the diaphragm up into your thorax can cause orthopnea, including massive ascites or paralysis of the diaphragm. On the other hand, orthopnea होने के लिए बहुत कुछ चीजें जरूरी है, right? You should have edema, you should have fluid in your legs, lower limb edema should be there. Then you should get into the sleep, you should start dreaming, you should slower reduce your diastolic filling time, उसके वजह से लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर बढ़ना चाहिए. All of these things will happen only when you have left heart failure. So that is why PND is the most specific symptom of left heart failure, while orthopnea can also be seen in patients with massive ascites. अगर massive ascites है और diaphragmatic paralysis, you can also write after heavy meal. Okay, so now we have a fair idea about the differentiation of right heart failure and left heart failure. Right heart failure में congestion कहाँ पे हो रहा है? Systemic veins में. Because of that you have raised JVP, tender hepatomegaly called as nutmeg liver or chronic venous congestion. You have portal hypertension and all the symptoms related to portal hypertension, including ascites and splenomegaly, and you have pedal edema. When you have left heart failure, congestion affects the lungs, that leads to dyspnea, orthopnea and PND. Okay, what can cause the left heart failure? If I have hypertension, there is increase in afterload, so I can develop left ventricular hypertrophy. If I have ischemic heart disease, left ventricle may not be able to contract well. And similarly, we have conditions like dilated cardiomyopathy and restrictive cardiomyopathy. These are some important causes for left heart failure. But now whatever we discussed, the right versus left heart failure, these concepts are more commonly asked during the bedside discussions, your case presentations or viva. In your MCQ based exam or theory exam, what do they ask? The current classification of heart failure based on what is called as ejection fraction.
Now, to be able to understand this classification concept, first we need to understand what is ejection fraction. And to be able to understand ejection fraction, we need to understand two more terminologies, end diastolic volume and stroke volume. सो अगर वेंट्रिकल को ब्लड एजेक्ट करना है तो पहले इसको रिसीव करना पड़ेगा एट्रिया से, राइट. सो ये एट्रिया से ब्लड कब रिसीव करता है? एट्रिया से रिसीव करता है ड्यूरिंग डायस्टोल, और फिर कॉन्ट्रैक्ट करके सिस्टोल में, आयोटा में एजेक्ट करता है, राइट. सेम अप्लाइज टू द राइट साइड. राइट एट्रियम विल गिव द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल, एंड सिस्टोल में ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में एजेक्ट करता है. सो फिलिंग हैपन्स ड्यूरिंग डायस्टोल, एजेक्शन हैपन्स ड्यूरिंग सिस्टोल. Now, if like let us understand the concept. So, if I have completed the diastole, जितना भी fill करना था ventricle में मैंने कर दिया, तो जो भी blood अब ventricle में है at the end of diastole, we will call it as end diastolic volume, right? What is end diastolic volume? Amount of blood in ventricle at the end of diastole. नॉर्मली ये कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली अराउंड 120 ml. सो हर बार जब हम एट्रिया से वेंट्रिकल को फिल करते हैं, वी फिल अराउंड 120 ml, लाइक रफली 120 ml विल बी देयर एट द एंड ऑफ डायस्टोल. जब डायस्टोल खत्म तो फिलिंग खत्म, 120 ml ब्लड हमारे वेंट्रिकल में है अभी. नाउ दिस 120 ml वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. अब वेंट्रिकल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करो और इस ब्लड को रेस्पेक्टिव आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा में, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में एजेक्ट करना है. आपको क्या लगता है अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पूरा 120 ml ऊपर की तरफ एजेक्ट करेगा? नहीं. सो व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉर्मली आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट पैथोलॉजी, नॉर्मली आल्सो व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट विल नॉट बी एबल टू एजेक्ट ऑल द ब्लड इनटू आयोटा. इसका कुछ हिस्सा एक कॉन्ट्रैक्शन में आयोटा तक पहुंचा देगा. जो भी हिस्सा ये आयोटा तक पहुंचा या दैट वॉल्यूम वी कॉल इट एज स्ट्रोक वॉल्यूम. सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द amount of blood, Janet absolutely right, amount of blood ejected by ventricle in one systole. एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना एजेक्ट किया? सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 70 ml. तो हम 70 ml एजेक्ट कर पा रहे हैं फ्रॉम 120 ml. जो भी अब वेंट्रिकल में बचा, कितना बचा? 120 माइनस 70 बचा कितना? 50, राइट. सो दैट वी कॉल इट एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. मतलब हमने सिस्टोल किया, एजेक्ट किया, बचा जो भी है उसको हम कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज अराउंड 50 ml. अब देन कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्शन फ्रैक्शन. अब ये एजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? देखो 120 ml मैंने वेंट्रिकल में भर दिया, वहां से मैंने एजेक्ट किया, कितना एजेक्ट किया? आई एजेक्टेड अराउंड 70 ml. सो दिस 70 ml बिकेम स्ट्रोक वॉल्यूम. अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का कितना परसेंटेज मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम में एक कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसको हम कहते हैं एजेक्शन फ्रैक्शन. मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हैज बिकम स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज एजेक्शन फ्रैक्शन. लाइक एग्जांपल देखो कि मैंने आपको 500 रुपए दिया, आई एम द एट्रिया, यू आर द वेंट्रिकल, आई गिव यू 500 रुपीज. तो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ? 500 रुपीज. अब इसे आप किसी और को देना है, वो है आयोटा. अगर आप उसको 300 दे देते हो, मैंने आपको दिया 500, 200 आपके पास बच गया, 300 आपने आयोटा को हैंड ओवर किया, तो जो 300 दिया आपने वो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम. बट अगर मैं पूछूंगा आपसे कि कितना परसेंटेज जो आपको मिला था उसका आपने दान किया, 500 का 300 कितना हुआ? दैट इज अराउंड 60%. सो यू कैन से सर 60% मैंने एजेक्ट किया. सो दैट 60% इज द एजेक्शन फ्रैक्शन. सो इफ आई हैव टू एक्सप्रेस इट इन मैथमेटिकल टर्म्स, the ejection fraction is equal to stroke volume divided by end diastolic volume, and obviously we are expressing in terms of percentage, so it has to be multiplied with 100. This gives the formula for calculation of ejection fraction. So then what will be the ejection fraction in the normal scenario? Let us take the numbers that we have already calculated, right? So 70 divided by 120 into 100. So can anybody calculate this and tell me? I'm damn poor in mathematics, इसलिए भाग के मेडिकल में आ गया था, नहीं तो किसी IIT में सड़ रहा होता आज. Okay, so 70 by 120 into 100 gives you the ejection fraction.
So then what is the normal ejection fraction? So someone please calculate and tell me if you have the calculator. I know जब आप medical में आ जाते हो तो mathematical बुद्धि थोड़ा सा कम हो ही जाता है. So you can take the help of calculator. Normally it ranges from 60 to 70%. 60 to 70%. Janit, good, very good. So roughly it ranges from 60 to 70%. Okay. Now, to understand the classification of heart failure based on the ejection fraction, we have to understand what can go wrong in the circumstances, right? So we have taken Zafar Samani mentioned it as 58.33. Okay, so let us take it as 60%, right? 60 to 70 is the normal range. So if I'm taking it as 60%, so just for mathematical simplicity and दिमाग को ज़्यादा काम नहीं देना है, तो we'll keep it simple. Let us presume two scenarios. एक का end diastolic volume है, let me call it as 500 ml. उतना नहीं होता है, I am just making it mathematically simple. और यहाँ पे हमने ये नॉर्मल सिनेरियो के जैसे बात कर रहे हैं. यहाँ पे हमने स्ट्रोक वॉल्यूम बनाया 300 ml. तो इसका एजेक्शन फ्रैक्शन कितना हुआ? 500 का 300. कितना परसेंटेज 500 का 300 में कन्वर्ट हुआ? 60%, राइट? सो एजेक्शन फ्रैक्शन यहाँ पे बन गया 60. दैट इज द नॉर्मल रेंज. नाउ यही नंबर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं. लेट अस थिंक अबाउट अ पेशेंट जहाँ पे हम वेंट्रिकल को ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे. ये एजेक्शन फ्रैक्शन क्या दिखाता है? इट टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन. अगर जितना ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा परसेंटेज स्ट्रोक वॉल्यूम में वो कन्वर्ट करेगा, राइट? सो लेट अस से देयर इज अ पेशेंट विथ impaired contraction. मतलब इसमें फिलिंग में कोई दिक्कत नहीं, we could fill, so we have maintained the end diastolic volume as 500 ml. लेकिन इसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली ये 300 ml वो यहाँ से एजेक्ट नहीं कर पाएगा. सो लेट अस से दैट ही इज एबल टू एजेक्ट ओनली 200 ml इंस्टेड ऑफ 300 ml. तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ. अगर इसका मैं एजेक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेट करूंगा तो कितना निकल के आएगा? 500 का 200 ml. 500 एंड डायस्टोलिक था, उसमें जब एक बार मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया सफिशिएंट फोर्स जनरेट नहीं कर पाया, इसलिए सिर्फ 200 ml आयोटा तक पहुंचा पाया. 300 ml बचिए गया मेरे पास. अब यहाँ पे एजेक्शन फ्रैक्शन कितना हुआ? स्ट्रोक वॉल्यूम 200 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100. सो आई थिंक दैट टर्न्स आउट टू बी 40%. 40%, राइट? लेट अस से अनदर सिनेरियो वेयर देयर इज impaired फिलिंग, मतलब वेंट्रिकल ठीक से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है. वेंट्रिकल हाइपरट्रोफीड है, कैविटी छोटा है, ठीक से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है. इसके वजह से फिलिंग कम होगा, राइट? तो अगर मैं कम फिल करूंगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा? एट्रिया से वेंट्रिकल में मैं कम फिल कर पा रहा हूँ क्योंकि वेंट्रिकल स्टिफ है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है. कम फिल कर पाऊंगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. सो लेट अस से दैट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हियर हैज बिकम 400 ml. लेकिन यहाँ पे वेंट्रिकल की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ठीक है, इस 400 ml का हम 60% इजेक्ट कर पाएंगे. सो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? 400 ml का 60% कितना होगा? 400 ml का 60%, आई थिंक 240, राइट? स्ट्रोक वॉल्यूम बिकम 240 ml. एंड यहाँ पे एजेक्शन फ्रैक्शन ऑब्वियसली मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना निकल के आएगा? 60%. सो नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस, कंपेयर द सिनेरियोज विद द नॉर्मल, व्हाट डू यू नोटिस? दोनों केसेस में अगर फिलिंग में दिक्कत हो या इजेक्शन में दिक्कत हो, दोनों केसेस में क्या हो रहा है? स्ट्रोक वॉल्यूम हैज बिकम लो. सो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है तो मतलब कार्डियक आउटपुट क्या हुआ? व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. तो अगर हार्ट रेट ठीक ठाक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है तो कार्डियक आउटपुट कम हुआ. तो प्रॉब्लम फिलिंग में हो या इजेक्शन में हो, अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम goes down. So when stroke volume goes down, your tissues are not going to get sufficient blood supply. So they will suffer the consequences of that. Now, this is where the ejection fraction helps me. So when I have patients with symptoms of heart failure, if I notice that ejection fraction appears normal, पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम है, नॉर्मल बंदा तो नहीं है, राइट? एसिम्टोमेटिक तो नहीं है, हार्ट फेलियर के फीचर्स हैं, बट एजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल निकल के आता है. सो व्हाट डज दैट सिग्निफाई? इट टेल्स मी दैट प्रॉब्लम फिलिंग में है. वी नॉट एबल टू फिल वेल. वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, इसलिए एजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है. वी नॉट एबल टू फिल वेल, इसलिए आपको कम स्ट्रोक वॉल्यूम मिल रहा है. ऑन द अदर हैंड, if I get a patient who has symptoms of heart failure and when I look at the ejection fraction, if it is low, what does it indicate? It indicates that problem
एजेक्शन में है, राइट, कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्शन फ्रैक्शन हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई वेदर फेल्यूर फिलिंग के लेवल पे हो रहा है या फेल्यूर एजेक्शन के लेवल पे हो रहा है. सो बेस्ड ऑन दिस, हार्ट फेल्यूर इज क्लासिफाइड इनटू हार्ट फेल्यूर विद reduced ejection fraction. नॉर्मल ईएफ क्या बोला मैंने, 60 to 70%, right? 60 to 70%. So we will call it as heart failure with reduced ejection fraction, usually abbreviated as HFrEF, when ejection fraction is less than 40%. अगर 40% से कम है तो we'll call it as reduced ejection fraction. And अगर हार्ट फेल्यूर है बट एजेक्शन फ्रैक्शन मिनिमली reduced है या fairly normal है, we will call it as heart failure with preserved ejection fraction. Nowadays some books also use the term heart failure with normal ejection fraction. So that indicates your patient has heart failure with EF more than or equal to 50%, minimally reduced or fairly normal. And अगर ये 40% से 49% तक है तो then we will call it as heart failure with mid range EF, mid range ejection fraction. ओके, अब आप बताओ मुझे इन 3 कैटेगरीज में एक पेशेंट को कहना है कि इसमें सिस्टोलिक फेल्यूर है, सिस्टोल में हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मैं किसको लेबल करूं एज सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर? इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम दिखाता है? इज इट विथ रिड्यूस एजेक्शन फ्रैक्शन और इज इट विथ प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन? हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए. जनित, वेरी गुड, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए, राइट? तो कौन सा इन 3 सर्कमस्टेंसेस में, ऑब्वियसली ये नॉर्मल छोड़ो, तो इन दो सर्कमस्टेंसेस में कौन सा सिस्टोल में प्रॉब्लम दिखा रहा है? हाँ, so तपस Samantha, the heart failure with preserved ejection fraction is the standard terminology, but some books also use in that same place as heart failure with normal ejection fraction. So which one is showing EF low is suggestive of systolic failure or EF normal is suggestive of systolic failure? कॉन्ट्रैक्शन कब होता है वेंट्रिकल का? सिस्टोल में, राइट? अगर ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मुझे क्या मिलेगा? एजेक्शन फ्रैक्शन लो. फिलिंग कब होता है वेंट्रिकल का? डायस्टोल में. अगर फिलिंग ठीक से नहीं होगा तो फेल्यूर डायस्टोल में है, तब एजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा? प्रिजर्व्ड रहेगा, राइट? सो एजेक्शन फ्रैक्शन विद रिड्यूस्ड हार्ट फेल्यूर विद रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन इज सजेस्टिव ऑफ सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर. Systolic heart failure, and heart failure with preserved ejection fraction is suggestive of diastolic heart failure. So basically we use EF as a tool to understand whether problem सिस्टोल के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन ठीक होने ना होने की वजह से है या डायस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल को ठीक से ना फिल करने की वजह से है. क्लियर? ये मिड रेंज है विच वी हैव नो क्लैरिटी कि ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन है या डायस्टोलिक डिसफंक्शन है. ये आगे चल के मोस्टली गोज इनटू reduced ejection fraction. Okay, now we will understand the causes for heart failure with preserved EF and heart failure with reduced EF. पहले preserved EF. preserved EF का मतलब क्या है? It is diastolic failure. मतलब क्या? डायस्टोल के टाइम पे हम ठीक से वेंट्रिकल को फिल नहीं कर पा रहे. क्यों फिल नहीं कर पाएंगे? जनित, आई विल बी डूइंग ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. क्यों फिल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि फिल करने के लिए जरूरी क्या है? एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल के प्रेशर से हाई होना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी हमने वेंट्रिकल को ही दी है, राइट? वेंट्रिकल को रिलैक्स करके अपना प्रेशर हाई करना होता है. अगर वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं कर पा रहे तो इसका प्रेशर लो नहीं होगा, तो फिर फिलिंग ठीक से नहीं होगा. अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वेंट्रिकल को रिलैक्स करने में? अगर वेंट्रिकल ऑलरेडी हाइपरट्रोफीड है, जैसे कि हमने ये इमेज में देखा था, इफ वेंट्रिकल इज ऑलरेडी कॉन्सेंट्रिकली हाइपरट्रोफीड, तो कैविटी छोटी तो उसका अंदर का प्रेशर ऑलरेडी हाई होगा, तो फिर हम ठीक से फिल नहीं कर पाएंगे. कब राइट वेंट्रिकल कैन डेवलप लेफ्ट वेंट्रिकल कैन डेवलप कॉन्सेंट्रिक LVH? whenever it is working against the resistance. Resistance कौन देगा? Aortic valve. So can aortic stenosis cause heart failure? Yes, why not? Then और कौन resistance देगा? Aorta and its branches. Aorta and its branches, how will they cause resistance? How will they cause resistance? By hypertension, right? What is hypertension? Elevated pressures inside the systemic blood vessels, aorta and its branches. So hypertension is the most common cause for left ventricular hypertrophy.
So whenever we have concentric left ventricular hypertrophy, it can lead to heart failure, and the most common cause for left ventricular hypertrophy is hypertension. Other than that, we can have aortic stenosis, and then we have a condition called as hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Okay, then what else can restrict the filling of the ventricles? See, ventricle को fill होने के लिए पहले isovolumetric relaxation करना होता है. It has to relax. So muscle has the property to relax. But if I have filled the muscle with abnormal substances, सोचो मैंने मसल में बहुत सारा आयरन लोड कर दिया है, या ग्लाइकोजन लोड कर दिया है, या लिपिड्स लोड कर दिया है, that may impair their ability to relax. So we call that condition as restrictive cardiomyopathy, right? So something is restricting the heart from relaxing. So we call it as restrictive cardiomyopathy. Okay. What else can impair the heart from relaxing? If the pericardium around the heart is very stiff and it does not allow it from relaxation, so we call it as constrictive pericarditis. In all these cases, nobody is stopping the ventricle from contracting well, but we are restricting them from relaxing. Thus we are restricting the filling. Diastolic को हम impair कर रहे हैं, लेकिन जितना भी हम फिल करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसका 60 to 70% वेंट्रिकल एजेक्ट कर पाएगा. लेकिन हमने कम फिल किया तो उसका 60-70% विल बी लेसर देन द नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम्स 60-70%. नाउ व्हाट कैन कॉज हार्ट फेलियर विद रिड्यूस एजेक्शन फ्रैक्शन? अगर एजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस है तो व्हाट डज दैट मीन? देयर इज अ सिस्टोलिक फेलियर. मतलब सिस्टोल में हम ठीक से वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे. वेंट्रिकल कब ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा? यू हैव टू रिमेंबर मेनली टू कंडीशंस. द फर्स्ट वन इज इश्केमिक हार्ट डिसीज. देखो इश्केमिक हार्ट डिसीज में क्या होता है, वेंट्रिकल का कोई ना कोई एरिया को ठीक से ब्लड नहीं मिल रहा है. लेट मी से दैट द लैटरल वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज नॉट गेटिंग द ब्लड सप्लाई. दिस एरिया इज नॉट गेटिंग ब्लड सप्लाई. क्या अब ये ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? ऑब्वियसली नो, राइट? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको ब्लड सप्लाई की जरूरत है. नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. अगर ये पूरा एरिया डेड है, वी कॉल इट एज इन्फाक्शन, राइट? इन्फाक्टेड है तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. सो अगर सोचो कि पूरा वेंट्रिकल नॉर्मल था, 100% स्ट्रेंथ थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो तब एजेक्शन फ्रैक्शन 60-70% था. बट जब कुछ हिस्सा ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली द फोर्स जनरेटेड विल बी लेस, एजेक्शन फ्रैक्शन विल बी लेस, द स्ट्रोक वॉल्यूम विल बिकम लेस, राइट? सो इश्केमिक हार्ट डिसीज is the most common cause for heart failure with reduced ejection fraction. Apart from that, you might have heard about something called as dilated cardiomyopathy. Can anybody tell me in the comments which toxin is commonly associated with dilated cardiomyopathy and which genetic mutation is commonly associated with dilated cardiomyopathy? Ischemic heart disease, dilated cardiomyopathy, and there is also a special form of cardiomyopathy which is acute condition called as Takotsubo cardiomyopathy, which we will discuss later when we take up the cardiomyopathy as a topic. So in all these cases, the ability of the ventricle to contract well has come down. So जितना भी मिलेगा उसका 60% वो eject नहीं कर पाएंगे, उसका 40-30-20% ही वो eject कर पाएंगे. Dilated cardiomyopathy is most commonly associated with alcohol, right? So generally I make this joke saying that अगर आप पीते हो ना तो सिर्फ बातों में दिल नहीं बड़ा होता है, पीने के बाद असली में आपका हार्ट डायलेट होते होते बड़ा हो जाता है. बट काम ठीक से नहीं करेगा वो अलग अलग बात है. एंड देन देयर इज अ म्यूटेशन इन अ जीन कॉल्ड एज टाइटिन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर familial cardiomyopathy. So alcohol is the most common toxin responsible for dilated cardiomyopathy, an important MCQ point, and the most common cause for familial or inherited dilated cardiomyopathy is mutation in titin gene. Apart from that, even cocaine can cause dilated cardiomyopathy. There are a lot of drugs. We will discuss that in the cardiomyopathy topic. So far what we have understood is what is heart failure. Heart failure is where either you are not able to fill the ventricles adequately or ventricle is not able to contract adequately. Thus ultimately in both the circumstances दो चीजें हो रही है. पहला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है. दूसरा क्या है, एट्रियाज में प्रेशर बढ़ रहा है, राइट? द प्रेशर इनसाइड द एट्रिया आर rise. These are the two outcomes because of impaired ventricular filling or impaired ventricular ejection. Now to be able to understand how do we diagnose and how do we manage these patients of heart failure, we need to understand the pathophysiology of heart failure. क्या होगा जब
हार्ट आइदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेल्योर होने लगता है. So two things happen once the heart starts failing, right? First thing that is happening is there is decrease in the stroke volume that we just learned, right? Be it take the example of impaired filling or take the example of impaired contractility, ultimately stroke volume दोनों में कम होगा, right? So I can indirectly say that decreased stroke volume means decreased cardiac output. अब मुझे think about naturally कि अब हार्ट के पास क्या ऑप्शन है या बॉडी के पास क्या ऑप्शन है ताकि ये स्ट्रोक वॉल्यूम में नॉर्मलाइज कर सके, क्योंकि जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है ना तो फिर बीपी क्या होगा. अगेन आई एम टेकिंग यू बैक टू योर फिजियोलॉजी. देयर इज अ सिंपल स्टेटमेंट दैट आई वांट यू टू ऑलवेज रिमेंबर. आपका जो सिस्टोलिक बीपी है, राइट, सिस्टोलिक बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर स्ट्रोक वॉल्यूम. आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ज़्यादा आपका सिस्टोलिक बीपी उतना ज़्यादा होता है. जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है तो ऑब्वियसली आपका सिस्टोलिक बीपी कम होगा. इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से आपका बीपी कम हो रहा है, राइट? यू आर गेटिंग इनटू हाइपोटेंशन. नाउ इन दिस केस व्हेन योर बीपी इज डिक्रीजिंग, don't you think the body has to compensate for it, right? I want to increase the cardiac output because tissues need more blood, and I also want to get the normalized BP. So how can I do that? Which system is primarily involved in correction of the BP? Which system is primarily involved in the correction of BP? Right, that is renin, angiotensin, aldosterone system or RAS axis. So this low BP activates RAS axis. Similarly, the low cardiac output and low BP also activates one more system, which is nothing but sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system or SNS. Now these two will try to correct the abnormality, right? So as you know, RAS has two components. One of them is angiotensin 2. Can anybody tell me what is the function of angiotensin 2? And दूसरा है aldosterone. दूसरा है aldosterone. What is the function of angiotensin 2? As you know, angiotensin 2 is a potent vasoconstrictor, right? तो ये क्या करेगा? It will cause vasoconstriction. Now, is it helpful for a patient with heart? Look at all the discussions we have and tell me, is it helpful for a patient with heart failure? Vasoconstriction से अब BP may be normalized, right? BP may get normalized because of vasoconstriction. But will it help the patient with heart failure? See, vasoconstriction से BP कैसे बढ़ सकता है? When we constrict the blood vessel, again Boyle's law comes into picture. Boyle's law says pressure and volume are inversely related. जब मैं ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करूंगा तो ब्लड वेसल का वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ. इसके वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ. बट व्हाट अबाउट द ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज? हैज इट इम्प्रूव्ड? बिकॉज जब हमारा कार्डियक आउटपुट कम हुआ था तो टिश्यूज को कम ब्लड मिल रहा था. हैज इट इम्प्रूव्ड? नो. कंस्ट्रिक्ट करके अंदर का प्रेशर बढ़ाया, टिश्यूज को ब्लड डिलीवरी तो इंक्रीज नहीं किया, राइट? So is it any way beneficial to the heart, to the tissues? No. Is it beneficial to the heart? अब आपके blood vessels constricted हैं, right? So when your blood vessel is constricted, how do I push the blood into this, right? Ventricle को अब क्या काम करना है? आपके constricted blood vessel, right? Let me say that the aorta is constricted. This aorta is constricted, narrow हो गया. अब ventricle को इस constricted vessel में blood push करने के लिए pressure और भी ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट? मतलब आपके आयोटा का प्रेशर हाई हुआ है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन. अब वेंट्रिकल का प्रेशर उससे ज़्यादा होना चाहिए टू बी एबल टू पुश दिस ब्लड इनटू द आयोटा. अब क्या हुआ? वेंट्रिकल का काम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? हैव वी इंक्रीज द वर्क ऑफ द वेंट्रिकल और हैव वी डिक्रीज्ड बाय कॉजिंग वेसोकंस्ट्रिक्शन? वी हैव इंक्रीज्ड, राइट? सो व्हेनेवर अ हार्ट इज फेलिंग, उसका कुछ रीजन है, राइट? आइदर इश्केमिक हार्ट डिसीज या हाइपरटेंशन, व्हाटएवर, उसका कुछ रीजन है, उसकी वजह से वो फेल हो रहा है. एंड नाउ बाय इंक्रीजिंग इट्स वर्कलोड वी आर पुशिंग इट मोर टुवर्ड्स फेल्यूर, राइट? वो और भी ज़्यादा फेल होते जाएगा. सो दिस वेसोकंस्ट्रिक्शन विल हार्म योर हार्ट. सो this is a harmful adaptation that is happening. Okay. Similarly, aldosterone का काम क्या है? What aldosterone will do? Aldosterone will increase sodium and water reabsorption
एट किडनीज, राइट। इसके वजह से जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो क्या होगा, जो भी किडनी को ब्लड जा रहा है उसमें यूरिन कम बाहर जा रहा है, ज़्यादा वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है। इसके वजह से सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, increased circulating blood volume. So I will address that. Increased circulating blood volume. तो अगर टोटल ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है तो जो ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है वो भी ज़्यादा होगा, राइट। सो जो भी वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है वो भी ज़्यादा हुआ। सो कैन आई से देयर इज इंक्रीज इन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एट द एंड ऑफ डायस्टोल जो ब्लड वेंट्रिकल को पहुंच रहा है वो भी ज़्यादा हो गया, इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये हार्ट को बेनिफिट कर रहा है या हार्म कर रहा है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज प्रीलोड। सो वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेंट्रिकल जिस रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करना है ना, सो तब वो इंक्रीज हो रहा है। जितना मैंने आयोटा और इसके ब्रांचेस को कंस्ट्रिक्ट करूंगा वेंट्रिकल को, उसमें ब्लड पहुंचाने में और दिक्कत होगी, राइट। इट हैज टू डू मोर वर्क, इट हैज टू कॉन्ट्रैक्ट विथ मोर फोर्स टू पुश द ब्लड इनटू कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल डायलेटेड है तो उसके अंदर ब्लड पहुंचाना आसान है, कंस्ट्रिक्टेड है तो वेंट्रिकल को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो इन मोर टेक्निकल टर्म्स आई वुड से वेसोकंस्ट्रिक्शन causes increased afterload and increased end diastolic volume causes, this is what we call as preload, right. So there is increase in preload, and for a failing heart both these loads are harmful. हमें हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं करना होता है when it is already failing. अगर एक सिंपल एनालॉजी देना है तो इट्स लाइक इफ यू हैव अ हॉर्स व्हिच इज लिंपिंग, राइट। अगर उसके ऊपर आप और सामान भर दोगे, राइट, इट विल डाई। सेम हैपन्स विथ हार्ट, इट इज ऑलरेडी फेलिंग बिकॉज इट हैज रीजंस टू फेल, एंड इफ आई इंक्रीज द लोड्स ऑन इट, इट विल फेल मोर. So simply I'm pushing towards the death. These adaptations are pushing the patient towards the death. और ये जो sympathetic nervous system activate हुआ था, right? Is it beneficial for a patient with heart failure? What sympathetic nervous system will do? It will increase the heart rate, right? Increase the heart rate, and this will also contribute to vasoconstriction. Vasoconstriction तो harmful है. Increased heart rate, is it beneficial to a patient with heart failure? Because ये heart rate ना stroke cardiac output को normalize करने की एक कोशिश है. Because what is cardiac output? Cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है बट मेरा कार्डियक आउटपुट ठीक होना चाहिए, तो हार्ट रेट बढ़ा के मैं अचीव कर सकता हूँ. बट फॉर अ पेशेंट विद फेल्ड हार्ट इट इज नॉट अ गुड थिंग. व्हाई? बिकॉज इंक्रीजिंग हार्ट रेट मीन्स प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ द डायस्टोल. जितना डायस्टोल शॉर्टन होता जाएगा, डायस्टोलिक फिलिंग उतना ही कम होता जाएगा. जितना कम फिल करेंगे कम ही वेंट्रिकल एजेक्ट कर पाएगा. दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जितना हार्ट रेट बढ़ाते जाएंगे जो हार्ट का मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज होता जाएगा. And if I am not able to give that because of reduced stroke volume, then heart or fail हो जाएगा. So this increased heart rate is also harmful to a patient with heart failure. On the other hand, another important change happens when there is heart failure. I have briefed that when there is heart failure, there is elevated atrial and ventricular pressures, right? Heart के chambers में pressure increase हो रहे हैं. And when pressures increase in the chambers of the heart send out signals, increased pressures in cardiac chambers, so they send out some signals कि हाँ अरे बाबा मेरे ऊपर बहुत वॉल्यूम का स्ट्रेस है, बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज स्टैग्नेटिंग और इट इज स्टेइंग इन माय चेम्बर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, कोई ना कोई मेरा प्रेशर कम कराओ. दे सेंड दिस सिग्नल्स. किसको भेजते हैं सिग्नल्स? दे सेंड द सिग्नल्स टू किडनी की अरे बाबा किडनी बहुत ज़्यादा ब्लड है मेरे अंदर, तो थोड़ा सा यूरिन में ज़्यादा वाटर निकाल ताकि मेरे अंदर का प्रेशर कम हो. सो व्हाट आर दो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स? वी कॉल दो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एज natriuretic पेप्टाइड्स. नाम में बहुत कुछ होता है इन मेडिसिन. वी आर कॉलिंग देम एज natriuretic पेप्टाइड्स. लुक एट द नेम. Natrium means sodium. Uresis means to make you lose that in urine. So these are peptides which tell the kidneys to make you lose more sodium in urine. And sodium is the most important osmotically active substance in the body. तो वो अकेला नहीं जाएगा, जहाँ पे भी सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे पानी भी जाएगा. So these natriuretic peptides
will primarily increase sodium and also thus अगर सोडियम जाएगा तो पानी भी साथ में जाएगा, increase sodium and water excretion in the kidney, excretion by kidney. So don't you think this is exactly doing the opposite of what your aldosterone does, right? Aldosterone ज़्यादा पानी रिटेन करके हार्ट के ऊपर बर्डन बढ़ा रहा है. On the other hand, natriuretic peptides, as you know, these are like ANP, BNP. They are telling the kidney to make you lose more water and thus they are reducing the circulating blood volume. And अगर circulating blood volume कम होता है तो end diastolic volume भी कम होगा, because total blood जो circulate हो रहा है वही कम है, तो जो हार्ट को आ रहा है वही कम है, तो जो वेंट्रिकल में डायस्टोल के टाइम पे फिल हो रहा है वो भी कम होगा. सो देयर विल बी डिक्रीज इन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. एंड जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो आई कैन से देयर इज डिक्रीज इन प्री लोड. एंड जब प्री लोड डिक्रीज होता है सो सम लोड ऑन द हार्ट इज reduced. जब प्री लोड इंक्रीज हुआ था तो मैंने बोल दिया कि हाँ ये हार्मफुल है, हम हार्ट को और ज़्यादा बर्डन कर रहे हैं. बट व्हेन आई रिड्यूस द प्री लोड दिस इज beneficial. This is beneficial. So thus, if now look at this whole pathophysiology, right? Whenever heart failed, two major changes happened. पहला क्या, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट कम हुआ, उसको करेक्ट करने के लिए रास एक्टिवेट हुआ एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ. दिस इज व्हाट वी कॉल एज न्यूरोहार्मोनल एडेप्टेशंस. मतलब एक नर्वस सिस्टम, एक हार्मोनल सिस्टम आर ट्राइंग टू अडेप्ट टू दिस सिचुएशन. बट जो भी चेंजेस हो रहे हैं दे आर टर्निंग आउट टू बी मोर हार्मफुल, बिकॉज आफ्टर लोड, प्री लोड और हार्ट रेट इंक्रीज होके वी आर क्रिएटिंग मोर हार्मफुल एनवायरनमेंट. ऑन द अदर हैंड, second thing that happened was elevation in the pressures of the cardiac chambers. And because of this elevated pressures, the cardiac chambers release some substances which will make you lose more sodium and water in urine and thus reduce the burden on the heart, and this becomes beneficial to a failing heart. So if I have to devise a treatment plan, now tell me what should I do with RAS? RAS को block करना है या support करना है? So therefore we can increase the pressures inside the cardiac chamber if I increase the circulating blood volume. Right? जितना blood में volume ज़्यादा है उतना heart में अंदर बहुत ज़्यादा जाएगा. किसी भी chamber में जितना ज़्यादा blood है उसका pressure उतना ही ज़्यादा होगा. Failure में क्यों pressure ज़्यादा हो रहे हैं? See, ultimately अगर failure systolic हो या diastolic हो, left या right हो, ventricles में pressure ज़्यादा हो ही जाते हैं. क्यों? Because सोचो, अगर ventricle में मैंने 500 ml fill किया है, उसका वो 300 नॉर्मली एजेक्ट करना चाहिए, 60% नहीं कर पाया. सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, वो सिर्फ 150 ml एजेक्ट कर पाया. वेंट्रिकल में कितना बचेगा अब एट द एंड ऑफ सिस्टोल? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. तो व्हेन आई स्टार्ट द डायस्टोल ऑलरेडी लॉट ऑफ ब्लड इज देयर इन द वेंट्रिकल. तो वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा? जितना ज़्यादा ब्लड है उतना प्रेशर हाई होगा. अब एट्रिया का प्रेशर उससे भी हाई होना चाहिए, तभी तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा. तो एट्रिया का प्रेशर क्या होने लगा? हाई. सो थिंक ऑफ इन एनी परस्पेक्टिव, कार्डियक चेम्बर्स प्रेशर्स start increasing when there is heart failure. So अगर मुझे ट्रीट करना है of a patient with heart failure, RAS को क्या करना पड़ेगा? Block or support? This is obviously harmful, so I have to block, right? Sympathetic nervous system क्या करना पड़ेगा? This is also harmful, I need to block. So how can I block the sympathetic nervous system? How can I block the sympathetic nervous system? I have beta blockers, right? So I would use beta blockers to treat a patient with heart failure. Now we know why beta blockers are used in heart failure. Similarly, I can either give AC inhibitors to reduce the synthesis of angiotensin 2, yeah, I can directly block the angiotensin 2 receptors with the drugs called as ARBs. Aldosterone को कैसे block कर सकता हूँ? I have aldosterone receptor blockers called as spironolactone or aplerenone. So these are all the standard drugs we use for the treatment of heart failure. अब इस तरफ देखते हैं जहाँ पे प्रेशर्स इंक्रीज, जहाँ पे इंक्रीज प्रेशर की वजह से नेट्रियोटिक पेप्टाइड्स कॉम्पेंसेशन का काम कर रहे हैं. अब इस सिस्टम को हमें सपोर्ट करना है या ब्लॉक करना है? दिस पेप्टाइड्स को हमें सपोर्ट करना है या ब्लॉक करना है? सो तब गुड. तो इस सिस्टम को हमें सपोर्ट करना है या ब्लॉक करना है? ऑब्वियसली दिस इज बेनिफिशियल, राइट? ये हार्ट के ऊपर का बर्डन कम कर रहा है, सो आई वांट टू सपोर्ट इट. हाउ कैन आई सपोर्ट? वेल, यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ ड्रग कॉल्ड एज नेसरेटाइड, which was a
नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड एनालॉग, मतलब नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड के जैसा ही काम करता था, बट अनफॉर्चुनेटली इन क्लिनिकल ट्रायल्स इट डिडंट शो ग्रेट रिजल्ट्स। तो आप बताओ मैं इस सिस्टम को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? एनालॉग्स को बनाने की कोशिश की है हमने, बट वी डिडंट फाइंड ग्रेट रिजल्ट्स। सो इन सच सर्कमस्टेंसेस देयर इज वन मोर अल्टरनेटिव. What is the alternative? Whenever you want to increase the activity of some substance, right, in pharmacology, there's a simple technique. Find out something which breaks down this product and block it. Done, right? So normally these natriuretic peptides are converted to inactive peptides by an enzyme called as neprilysin. Neprilysin is also called as neutral endopeptidase. It's also called as neutral endopeptidase, or you can call it as neprilysin. So if I block this neprilysin, I will stop this natriuretic peptides from being converted to inactive peptides. They will stay as active peptides for long, and it will exert the beneficial effect. So I can derive benefit by blocking neprilysin. I can derive benefit by blocking sympathetic nervous system, aldosterone, as well as angiotensin 2. So now that we have understood the pathophysiology, going forward, the pharmacological management will become easy. But before that, a little bit about the diagnosis of heart failure. So we have already learned about the signs and symptoms of heart failure. Right heart failure होगा तो rise JVP, hepatomegaly, pedal edema, ascites, and features of portal hypertension. Left heart failure होगा तो congestion in the lungs giving rise to dyspnea, orthopnea, and PND. So when a patient of these symptoms come to us, obviously we all know that these features are not specific for heart failure. यही symptoms मुझे दूसरे conditions में भी मिल सकते हैं. So to count कि हाँ ये जो symptoms हैं ये heart failure की वजह से ही है, I need some diagnostic clarity, right? So that clarity can come from either elevated natriuretic peptide levels. What natriuretic peptides we are looking at? We are not looking at the ANP. ANP levels can be elevated anytime the atrial pressures get elevated. More reliable marker is BNP, which indicates the ventricular pressures being elevated. So we will look at the elevated BNP levels or N-terminal pro-BNP levels. BNP levels or N-terminal pro-BNP level. Some of you may be thinking, what is this N-terminal pro-BNP level? In your biochemistry, you study that when a peptide is synthesized or a protein is synthesized, it is not always synthesized in its final form, right? पहले एक अमीनो एसिड का चेन बनता है, फिर उसका एक सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब होने के बाद फाइनली एक पेप्टाइड बनता है, राइट? प्रोटीन बनता है. You know that beta plated sheet and all that secondary, tertiary, quaternary structure. एंड उससे भी पहले जब अमीनो एसिड का चेन बनता है ना, तो समटाइम्स एक चेन को फिर बॉडी काट काट के मल्टीपल पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स बनाती है. फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड अबाउट इंसुलिन, राइट? इंसुलिन इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एज अ प्रो इंसुलिन, फिर प्रो इंसुलिन को काट के हम बनाते हैं एक सी पेप्टाइड एंड इंसुलिन. सो वैसे ही BNP is the final form, but it is before that produced as a pro-BNP level. वहाँ पे कुछ अमीनो एसिड को काट काट के हम फिर फाइनल फॉर्म BNP बनाते हैं. अगर दोनों में एलिवेशन है इसका मतलब हार्ट फेल्योर है. या अगर हम pro-BNP लेवल्स या BNP लेवल्स नहीं देखना चाहते हैं तो देन वी नीड टू हैव ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ कार्डियोजेनिक पल्मोनरी और सिस्टमिक कंजेशन. दिस इज अ सिंपल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. सिंपल वे में बताना है तो जस्ट यू शुड हैव सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेल्योर plus elevated BNP or NT-proBNP levels. Your diagnosis of heart failure is done. Now, before going to management, one quick look at the stages of heart failure. We have different stages of heart failure. Actual heart failure जो हम clinic में देखते हैं, they are all either stage C or stage D. But before that, we have stage A and stage B. So what is the stage A heart failure? Basically यहाँ पे heart failed नहीं है. There is no impairment of filling or there is no impairment of contraction. फिर भी इसको हम heart failure क्यों कह रहे हैं? Because the best time to treat heart failure is even before it started. So basically those who have risk factors for heart failure, they are called as stage A. Stage A is nothing but risk factors for heart failure. There is no current or prior symptoms or signs of heart failure. बस सिर्फ रिस्क फैक्टर्स है. फॉर एग्जांपल पेशेंट विद हाइपरटेंशन और इश्केमिक हार्ट डिसीज,
राइट, और पेशेंट्स नो विद नोन एक्सपोजर टू कार्डियोटॉक्सिन, राइट, सालों से अल्कोहल पीते आ रहे हैं विच इज अ कार्डियक टॉक्सिन, और अ पेशेंट विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, सो दीज आर रिस्क फैक्टर्स। अगर सिर्फ रिस्क फैक्टर्स हैं तो देन इट इज द स्टेज ए। Teaching MBBS, I will address that. I will address that. Okay. Then second, stage B, we call it as pre-heart failure. अब यहाँ पे क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ हार्ट फेल्यूर आर ऑलरेडी देयर। लाइक आई हैव स्टार्टेड सीइंग पेशेंट्स विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और चेंबर एनलार्जमेंट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, वो दिख रहा है, लेकिन साइंस एंड सिम्टम्स अभी भी नहीं है। सो आइदर आई हैव स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज or I have abnormal cardiac function on echocardiography, right, or I have elevated natriuretic peptides। मतलब हार्ट फेलियर के कुछ ऑब्जेक्टिव लैबोरेटरी एविडेंस मिल रहा है बट विदाउट साइंस एंड सिम्टम्स, दैट इज स्टेज बी। जब साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं then we will call it as stage C. So stage C is basically the symptomatic heart failure patients whom we see in the clinic. These don't present to us with symptoms. On evaluation, we may find out that, okay, this is hypertensive, so it is stage A. This patient has got reduced left ventricular ejection fraction, or this patient has got left ventricular hypertrophy, so that is stage B. Now, symptoms bhi hain, so then that is stage C. Then what is stage D? Stage D refers to advanced heart failure, जहाँ पे symptoms are very severe, they are either recurrent or they are requiring hospitalization, or patient is having severe symptoms at rest. Then we will call it as stage D, means more severe form of heart failure. Symptoms के साथ है तो stage C, symptoms severe हैं, at rest के टाइम पे आ रहे हैं या बार बार हॉस्पिटल में एडमिशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो then we will call it as stage D. Stage A, risk factors. Stage B, evidence of structural heart disease or functional abnormality of the heart or the elevated natriuretic peptides, but no signs and symptoms. Stage 3 में क्या है, signs and symptoms है. Stage 4 में more advanced signs and symptoms है. Okay. I'm teaching MBBS. I'm looking at your teaching MBBS one. I will address that at the end of the session. Okay, so now we have understood the basics of heart failure. Quick take on the management, and then we will be done for the day. It will take hardly another 7 or 8 minutes. So I'm taking you back to the pathophysiology that we have discussed. We already know, right, what we need to block and what we need to support, right? So in terms of pharmacotherapy of heart failure, generally we treat the patients. If you ask me, sir, I want to use the single most important drug for a patient with heart failure among all the drugs that you are going to talk about, what it should be. What do you think should be the answer? I will just take 5-6 minutes more. Okay. So first thing is, we should use diuretics till euvolemia is achieved. Now what do I mean by euvolemia? अगर patient is having edema कम होने तक पहले diuretics यूज करो, उसके बाद में proper treatment of heart failure आएगा. What do we use? For all patients with heart failure, what is recommended? First, we will use either AC inhibitors or ARBs, primarily to reduce or block the AT2 activity. Second, we will also use beta blockers. Now, beta blockers बहुत type के, right? You know, cardioselective, non-selective and all. बट मेडिसिन में हम थोड़ा सा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ, ये बीटा ब्लॉकर हमने ट्राई किया है हार्ट फेलियर पेशेंट में एंड इट इज बेनिफिशियल, देन वी रेकमेंड यूजिंग इट, राइट? सो देयर आर 3 बीटा ब्लॉकर्स व्हिच आर रेकमेंडेड, व्हिच यू कैन रिमेंबर. एनीबडी फ्रॉम बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, यू कैन रिमेंबर विद द निमोनिक बैंगलोर मेडिकल कॉलेज और BMC, राइट? बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एज BMC, व्हिच इज बिसोप्रोलोल, कार्वेडिलॉल एंड मेटाप्रोलोल. So these are the 3 drugs which have been proven effective in the studies, and that is why these are the preferred agents. तो अब हमने RAS का AC inhibitors या ARB के साथ angiotensin 2 को ब्लॉक किया, बीटा ब्लॉकर्स के साथ sympathetic nervous system को ब्लॉक किया. अब aldosterone का भी कुछ करना पड़ेगा. That I can achieve with spironolactone, which is a mineralocorticoid receptor blocker. Okay. इसके अलावा अगर मुझे सपोर्ट करना है हार्ट, right, what can I support? I can support with the help of
blocking the neprilysin, right? So can you give me the example of neprilysin blocker? That is ARNI, right? What is ARNI? ARNI is a combination of angiotensin receptor blocker plus neprilysin inhibitor. So right now there is a combination available, that is valsartan plus sacubitril is the drug which blocks the neprilysin. So valsartan plus sacubitril will be preferred. Only thing I want you to remember is अगर आप ARNI यूज करना चाहते हो तो then you have to take out whatever AC inhibitor or ARB the patient is already taking. आप दो 82 blockers या दो like AC inhibitor plus ARB यूज नहीं कर सकते हैं. So we should take out whatever AC inhibitor or ARB we are using, and there is one more drug to be considered here, which is SGLT2 inhibitor. So only last bit, why is the SGLT2 inhibitor being used here? Many of you know that it is used for treatment of diabetes. So heart failure में क्यों use कर रहे हैं? Why am I using it in patients with heart failure? Anagha Pawar, yes, these classes will be useful, but I would recommend कि जो शुरू में हमने किया है इस series में, where we have discussed approach to cough, shortness of breath, fever, seizures, those will be more useful. Now we have reached a little advanced stage of medicine discussion. I would recommend you to start from there. I don't need inactive natriuretic peptide. I want active. इसलिए जो inactivate करता है ना उसको block कर रहे हैं इसमें. बस ये जो natriuretic peptides हैं ये मुझे चाहिए because these are helpful for my failing heart. But इनको ये neprilysin inactivate करता है, तो इसलिए मैं neprilysin को block कर रहा हूँ. इनको block करने की वजह से inactivation में convert होना कम होगा and I will have more active peptides. That's the logic. Okay, so I asked you how SGLT2 inhibitors help, right? What is SGLT2? SGLT2 is a transport molecule which is there in your renal tubules. It helps you to reabsorb glucose. See किडनी काम कैसे करता है? पहले फिल्टर करता है, फिर जो जरूरी चीजें हैं उनको रीअब्जॉर्ब करता है, जो जरूरी नहीं है उसको यूरिन में जाने देता है. तो रीअब्सॉर्प्शन के लिए, ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन के लिए वी हैव दिस मॉलिक्यूल कॉल्ड एज SGLT2 इन किडनीज. इंटेस्टाइन में है SGLT1. तो अगर मैं SGLT2 को ब्लॉक करूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू रीअब्सॉर्ब ग्लूकोज, सो आई विल लूज ग्लूकोज इन यूरिन. इफ आई लूज ग्लूकोज इन यूरिन, ब्लड शुगर लेवल कम होगा, तो डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल है. हार्ट फेलियर के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? द लॉजिक इज व्हेन यू लूज ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इज ऑल्सो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस. तो ग्लूकोज अकेले नहीं जाएगा, उसके साथ में पानी जाएगा. इनफैक्ट व्हेन वी हैव डायबिटीज यू हैव हर्ड अबाउट द सिम्टम कॉल्ड एज पॉलीयूरिया. क्यों होता है? बिकॉज यू स्टार्ट लूजिंग ग्लूकोज इन यूरिन, उसके साथ में पानी भी जाता है. That is why you have polyuria. And when you start losing water in urine, your blood starts getting concentrated. It triggers your thirst center. That is why you start drinking a lot of water. That is what we call as polydipsia. So diabetes में polyuria, polydipsia क्यों होता है? Because you are losing glucose in urine. मैं वही exactly कर रहा हूँ. I'm blocking the SGLT2. Reabsorption of glucose को inhibit कर रहा हूँ. So I start losing glucose in urine. With that I lose water. When I lose water, circulating blood volume comes down. Preload comes down. It is beneficial to heart. दूसरा क्या है? If I start losing glucose in urine, weight के साथ क्या होगा? Normally when we treat patients with SGLT2 inhibitors, for example, empagliflozin, we end up losing around 70 grams of glucose in urine, right? In terms of calories, कितना हुआ? 1 gram of carbohydrates is 4 calories, 4 kilocalories. So if I lose 70 grams of glucose in urine, I'm losing 280 kilocalories. उतना लॉस करने के लिए मुझे 1 घंटा स्विम करना पड़ेगा या 1 घंटा साइकिलिंग करना पड़ेगा. दैट मीन्स दिस पेशेंट्स आर पैसिवली लूजिंग, सो दैट हेल्प्स देम लूज वेट. एंड लॉस ऑफ वेट इज बेनिफिशियल टू हार्ट. क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी मास है, राइट, हर टिश्यू के हर सेल तक ब्लड पहुंचाने का काम हार्ट को करना पड़ेगा, राइट. जितना आपका वेट है, हार्ट का काम उतना ही ज़्यादा होगा. जितना आपका वेट कम होगा, हार्ट के ऊपर बर्डन उतना ही कम होगा. So if you lose weight, that is also beneficial to a patient with heart failure. So that is why these drugs are considered as the first line medications, and these are associated with reduction in mortality in patients with heart failure. They cause decrease in the mortality. So
That is why whenever you look at a prescription of a patient with heart failure, generally it will have an ACE inhibitor or ARB. Nowadays, so mostly we prefer using ARNI plus beta blockers. This is the standard treatment. Zaruri hai to fir spironolactone. And nowadays we have started adding SGLT2 inhibitor. I have only one last question. So Tapa, right. So I have only one last question. Digoxin का साथ क्या करना है? E. Chandra Prasad, the heart failure with preserved ejection fraction, we don't have much research or experience. This is like we are gathering the data in the recent decade. Heart failure with reduced ejection fraction, we have been treating for decades now, like many decades now. So whatever we know about heart failure management comes mainly from our experience with heart failure with reduced ejection fraction. हम इसी को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रापोलेट करते हैं. As of now, for all heart failure patients, we follow the same method. आगे जाके जब डेटा और रिफाइन होगा, we may get to know that this particular class of drug may be better or may be inferior in a patient with heart failure with preserved ejection fraction. तब थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चेंज होंगे. राइट नाउ वी अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स टू बोथ द पेशेंट्स. ओके. Okay, in terms of mortality reduction, both have undergone the clinical trials. Both are effective. Both are effective. Even in terms of glycemic control and diabetes, both are equally effective. Okay, now what should I do with digoxin? Digoxin. What is digoxin? This is the last question. What is the role of digoxin in patients with chronic heart failure? Digoxin is, as you know, it's a inotropic agent. It's a cardiac glycoside which stimulates your heart to contract more. When we look at all these medications, right, ये सब क्या कर रहे हैं? They are reducing the burden on the heart. After load, preload, reduce करके burden reduce कर रहे हैं. इसलिए जो this rate से heart fail होते जा रहा है, हम उसको slow कर रहे हैं. We are allowing the patient to survive longer, right? So our goal of this treatment is to make them survive longer. जब हम digoxin देंगे, we will make the heart contract more. अगर वो ज़्यादा contract करेगा तो ejection fraction improve होगा, stroke volume improve होगा, tissues को ज़्यादा blood मिलेगा, patient के symptoms better हो जाएंगे. But we are pushing the heart to do more work. वो जितना ज़्यादा काम करेगा, burden उतना ही ज़्यादा है, उतना और fail होते जाएगा. Thus symptoms better होंगे, mortality की तरफ patient बढ़ता जाएगा. So in other words, I would say digoxin increases mortality. Digoxin increases mortality. This is a repeatedly asked question. Which of the following drug used in patients with cardiac failure is associated with increased mortality, or which of the following drug is not associated with reduction in cardiac mortality in patients with heart failure? Digoxin. Simple analogy में समझना है तो think of a horse which has a broken leg, right? जितना और मारोगे उसे, वो दौड़ेगा, दौड़ने की कोशिश करेगा, दौड़ेगा, लेकिन उसकी जो लेग की हालत है और खराब होते जाएगा, आगे कहीं ना जाके वो गिर के मर जाएगा. Same thing we are doing with digoxin to heart. Heart is already failing. We are stimulating it to overwork. By overworking, आपको थोड़ा बहुत symptomatic relief दे देगा, लेकिन और तेजी से fail होता जाएगा, and it leads to increased mortality. So digoxin, where do we use? Well, in today's practice, mostly some doctors use it in acute heart failure, which we will discuss in the next session. But otherwise, in the chronic heart failure, digoxin is harmful and it is better avoided. So that's it for today, guys. We have covered the brief about the heart failure. What I would recommend is please go through the MCQs from whatever app you are following, and as well as the PW Medit app. Solve the MCQs, you will understand the concepts even better, whatever we have discussed. And over time, as you read more physiology, pathology, your concepts will get solidified. And we will redo this session when most of you reach again the final MBBS. That time we will discuss with little more details. In the next class, tomorrow there will not be a class because the class was scheduled to cover both the management and the, today we were supposed to cover only the basic pathophysiology, and tomorrow management. I have crumpled it in one class because other faculty are also lining up for the classes. The next class, the team will share the list with you. I think we are going to discuss about some recent updates in the heart failure management, about some new drugs and pharmacotherapy, primarily focusing on those who are preparing for INI CET. Okay. So with that, I'm signing off, guys. Good night. See you next class. Bye.